and मेरा character name विक्रम है, and Vikram is a protagonist in the film. He is a very relatable person, I think, but no, I mean not that much. Also, you'll find that out later. Not that much also. But it's a very nice story. I mean, he's got a really nice. He's a nice person in general. Just life happens to the character, and he just shifts. And लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ, ऐसा देख के आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें लोगों के साथ हो जाती हैं जिससे वो फ्लिप कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, पर ऐसा है. और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑल्सो बिटवीन मी एंड उदिता, विक्रम एंड उदिता. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म आर ऑल्सो वेरी नाइस. आप बताइए मैडम, आपका नाम है? मेरा नाम उदिता. मेरा नाम कृसान है और मेरे कैरेक्टर का नाम उदिता है. एंड तो उदिता इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल, and she has like a lot of dreams that she wants to make true, and she would do anything to like, you know, do that, because that's what she's wanted to do her entire life. And she falls in love with Vikram, and they have a very cute love story, and she's best friends with Simran, and Simran is dating Vansh. And the entire story is very beautifully put together. The script is really nice. We have done a great job, all of us. And yeah, it would be great if you guys watch it. अमारिस का मतलब क्या होता है? What is the meaning of अमारिस? The meaning of it is a gift from God, which is something that we all think it was. We shot this in the lockdown in Rishikesh, and we all had a great time. There were ups and downs. There were many, like on the first day of shoot we figured that, you know, we weren't getting the same location the next day, and there was like, it was all crazy. But then I looked at Abjeet and I was like, chill, everything will be fine. And then the next day everything got sorted. But yeah, there's a lot of heart that has gone into it, and we're all like, this is our first movie. Yes, first film. For the producer, for the you've not done a film now? No. For the actors. So yeah, it's something very big for us, and it would be great if you guys go and watch it, because we put our full heart into it. As you said, the shoot is done in Rishikesh, right? So what was your experience? Will you like to share any of your moments? It was great being in Rishikesh right after the lockdown, because we were all like caged at home. So that was amazing. It's a beautiful place. There was this one song, Mashallah, that we were shooting right at the Ganga, and it was in the middle of the night. I was wearing a tiny dress, and we had to and there was wind blowing from both sides, and it was like 10 degrees, and we're both like shaking. But it was so much fun. Just it killed us, but it was just great. It turned out amazing. It looks great. The film looks amazing. We all look amazing. So what would you like to say? How was your experience? My experience, as she just mentioned, like, you know, we were just out of the lockdown, and then traveling all the way to Rishikesh, where it's visually very beautiful. Plus, it was nice. The weather was amazing, as she said. It was chilly, and then we had to not wear warm clothes while shooting, so we were all shivering. So that was, I think, that's one memory that all of us share. We were all shivering. Yeah. And as she mentioned, there were a lot of ups and downs, and when it's your first project, like, you know, it's your baby, so you put your heart and soul into it, and whatever the obstacles might come in between, like, you know, you overcome it, and finally, I think now on 27th of May, it's coming to the theatres. As masses like always look for the film, what is the interesting part? So what is the interesting part that people should go and see this? I think it is a slice of life, and it is a story of three young or two couples basically, or four young individuals having their own ambitions, their aspirations, and हर किसी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है या चाहता है कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से हो, अपने पार्टनर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस होते हैं. So इसी का एक amalgamation I think is AMARIS. 27 मई को बहुत सारी फिल्म रिलीज हो रही है. सिर्फ एक ही सवाल करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा. जी. लगभग 8 से ज़्यादा फिल्म रिलीज हो रही है. बहुत सारी फिल्म ऐसी होती हैं क्योंकि हर वर्ष 1000 फिल्मों की ज़रूरत होती है, जिसमें से 100 फिल्म मुश्किल से रिलीज.
27 मई को बहुत सारी फिल्म रिलीज हो रही हैं और सिर्फ बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो हीरो के गांव में रिलीज होती है, एक सिनेमाघर, एक हीरो उनके यहाँ रिलीज होती है, झांकी हीरो रहने वाले। सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, आपकी फिल्म कितने सिनेमाघर में रिलीज हो रही है? सर ये चीज़ तो आप जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आप उनसे एक बार पूछें तो उनको बेटर वो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे आपको। हमें एक्चुअली पर इट्स अ पैन इंडिया रिलीज सर, ये सिर्फ मतलब पैन इंडिया रिलीज फॉर श्योर। नहीं, जैसे आपने कहा कि 1000 फिल्मों का मुहूर्त होता है, 100 बनती है, तो आई थिंक एटलीस्ट हम इन 100 में तो पहुंच गए कि एटलीस्ट कंप्लीट हुई है और थिएटर्स तक जा रही है। तो आई थिंक ये एक फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ी बात है। हीरो के गांव और हीरो नहीं एग्जैक्टली, बट आई थिंक ये फर्स्ट चीज़ एक अचीवमेंट है, एक अपने आप में अचीवमेंट है। एंड अब देखते हैं कि कहाँ कितने थिएटर्स में रिलीज़ होती है, कितने लोगों को पसंद आती है। इनिशियली प्लान था कि सिर्फ ऑनलाइन ले जाए, बट एज थिएटर्स खुल चुके हैं तो एक अटेम्प्ट है कि हम थिएटर्स तक भी ले जाए, सिर्फ ऑनलाइन ना लेते जाते हुए थिएटर्स पे भी ले जाए। As we had a talk to producer, now just now she spoke. So how was all of your experience with her? Oh. I think she's the sweetest producer that we have met, like, you know. Huh? नहीं? When I first met her, I was so scared of her. I didn't talk to her for 2 days. She talks very less. She talks very Yeah, less. she's But when just she starts talking, to the I think point. she talks. In the start, then when you get to know her, she's the sweetest. She's amazing. Very sweet. She made sure we're all very comfortable and it all went very smooth. Yeah, and she gets her stuff done even though she's sweet. Yeah. So lastly, any message to all the viewers who will be watching? This is a love story gone wild. Yeah. So basically, just go sit back, enjoy the love story of these two young couples, and just have fun. Thank you. I want to ask you questions. काफ़ी देर से सुन रही हूँ, everybody speaks about me as like a female producer, but I think I'm just a producer. It's the gender is irrelevant to it, that fact, right? And I have grown with the film, and it has taught me a lot about film industry and how to get a film made. And now we're getting to a point कि अब बन गई है, तो we're getting कि how does it get to the audience जिनके लिए बनाई गई है film. कैसे आपने आर्टिस्ट का सिलेक्शन कैसे किया? I think it was very okay. So while Krizan, I think I used to watch her earlier in her shows also, and it was one of my favorites at that time. ये है आशिकी, right? Yeah. कैसी है आशिकी? कैसी है यारी? Yes. So at that time I used to love that show, and from there I always had that liking to her. And when the director or the team was showing us कि ये options हैं for the female lead, so I was like no, we should go for Krizan, and there was no question or debate about it. There was just like done. And for Kinshuk, yes, I'm sure he's heard it a million trillion times, but it was the shakalaka boom boom that was like engraved in our heart, and I'm sure it is of every kid who was in the 90s. Yeah, for sure. So when I met him the first time, I told him कि you're the first young guy who I can look up to and say that I've been a fan of you since I was a kid. And he's still young, right? So that's his achievement as he started working so early, so that's right. We loved it. We loved his show. We loved him then. We do like him now. So you are the music director, Yeah. lyrics writer, and Yeah. singer also. Yeah. Tell us something about that. Well, I guess my first passion was music only. The lockdown had a lot to teach to all of us, and मेरा रुझाव आर्ट की तरफ उसी टाइम बढ़ा, क्योंकि फ्री टाइम में इंसान क्या करता है, राइट? बट जब मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि there was a real heart in it, and तो मैंने पहले कुछ गाने लिखे, कुछ गाने प्रोड्यूस, कुछ गाने हैं भी जो अभी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बट जो इस फिल्म की शुरुआत हुई वो भी उस गाने से ही हुई जो मैंने उस टाइम पे लिखा था. तो जब मैं वो गाना हम लोग वी वर जस्ट लाइक अ फ्यू फ्रेंड्स हु वर सिटिंग एंड टॉकिंग, एंड मैंने ये गाना गाया तो मैंने कहा यार मेरे दिमाग में एक स्टोरी है दैट फिट्स वेल विद दिस सॉन्ग. तो मैंने कहा वो स्टोरी क्या है? देन आई हर्ड द स्टोरी एंड आई वाज लाइक
perfect. I fell in love with the story. Then we were like, okay, then we're making a movie now. And she's amazing. If you hear the songs, you will fall in love with it. She's too good. The songs are the heart of the film basically. आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ कि सुन दो, बहुत जल्दी रिलीज भी होने वाले हैं। बहुत जल्दी रिलीज हो रहे हैं 15th में, just the 15th of next month. You know a line or a tune? Okay, or tune? Your favorite tune, हाँ. Okay. Just Do you want the love song tune or do you want the heartbreak tune? Heartbreak. Heartbreak? Yeah, everyone loves heartbreak. Okay. Okay, well, this is like... I think ये लाइन वो है जो हर यंग कपल एक दूसरे को बोलते हैं जब दिल टूटता है तो करो ना वादा वो निभा ना सकते जो करो ना वादा वो निभा ना सकते जो Woohoo! Don't make promises you can't keep. That's what this means. And ma'am, what was the title of the film? Title of this Yeah. title उसके बारे में clarify कीजिए title लेके. We wanted it to be unique, that's why. We wanted a Greek title. We wanted all of you to ask this question 20 times. Is the name of the character or something? It is very significant in the film. It's not like totally like कि गाना film कुछ और है और नाम कुछ और है. It is very significant in the film. But we want you to find that out yourself. But the meaning of AMARIS is a gift of God. And it is a gift of God for all of us. And हम सबके बहुत ही काम ही नहीं प्रोफेशनली हमारे दिल जुड़े हैं इस फिल्म के साथ हमारी emotions हमारे we did just whatever it took to make it. Whatever came our way, we were like, no, nothing's gonna get in our way. Talking about the casting, on what basis you did the casting of this? Casting is done. What are the basis of casting? Well, love. I love them. No. मैडम आपने जो अभी गाना गाया जी वो बहुत अच्छा लगा ऐसा लग रहा है जैसे आप साउंड में गा किसमें इसके गाया लिए जो आने वाले और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं जी उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे क्या टिप्स देना चाहेंगे कि आपको ये बिल्कुल करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर सिंगर एंड पीपल हु सिंग हिंदी में वेल मैडम हिंदी में अच्छा हाँ जी बिल्कुल राइट हाँ तो जो भी लोग हैं जो एस्पायर करते हैं टू बी अ सिंगर या उनको लगता है कि वो अच्छा गाते हैं तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि एक सिंगर में और एक ऐसे पर्सन में जिसके पास पोटेंशियल है और वो गाते अच्छे हैं वो फील करते हैं कि उनकी आवाज़ अच्छी है उनमें सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि उन सिंगरों ने अपने आप में बिलीव किया और गाना बनाया और आउट देयर लोगों को सुनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे डाला तो वो सिंगर बन जाते हैं वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है तो एवरीवन शुड बिलीव इन देमसेल्व्स कि अगर उनको लगता है कि अच्छा गा सकते हैं वो अगर नहीं भी गाते किसी को नहीं लगता कि वो अच्छा गाते हैं एक्चुअली बताओ तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गेट आउट देयर एंड जो भी है यू नो लाइक एटलीस्ट पुट इट इन मैनिफेस्टेड लाइक यू नो पुट इट इन टू एग्जिस्टेंस देन लेट अदर्स डिसाइड इसी फिल्म का एक गाना और बोलना you're not gonna wait till 15th, huh? Alright, so sad song, love song. Everyone wants sad Everybody stuff. is sad here. Everybody is heartbroken, kya? Okay. ठीक है, okay. तो लगता है कि उनके पार्टनर मतलब ही हो जाते हैं तो उनके लिए गाना है कि यार मेरा खुद गर्ज हुआ five songs. रिलीज़ के लिए एक्चुअली प्लानिंग तो बहुत अच्छी है बट वी वांटेड दिस टू बी अ पोस्टल लॉन्च एंड द रिलीज डेट सॉन्ग रिलीज़ के लिए वी आर गोना बी डूइंग अनदर फिल्म रिलीज इट्स ऑन 27th ऑफ नेक्स्ट मंथ 27th वो प्लानिंग पैन इंडिया बट मेट्रोपॉलिटन मुंबई दिल्ली पे मेन फोकस है तो आपको आपके नियर थिएटर पे डेफिनेटली मेरे देखने को मिलेंगी एंड कोशिश ये ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स की हमने क्योंकि अजय जी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अपनी पूरी 100% मेहनत लगा रहे हैं इसको टू गिव इट द बेस्ट प्लेस ताकि ये सब तक पहुँचे और अच्छे से पहुँचे क्योंकि सब जो भी इस टीम में जुड़े हुए हैं कोई भी प्रोफेशनली नहीं मुझे लगता है सब दिल से जुड़े हुए हैं तो अपना बेस्ट कर रहे हैं
बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिल्म को ढूंढने में। जब ये रिलीज़ होगी उसके बाद आप लोग को कोई आपके आसपास के थिएटर में ज़रूर मिलेगा कि आप जाके इसको देख पाएँ। अच्छा, OTT भी एक अच्छा ऑप्शन है, उस पर क्यों नहीं जा रहे? OTT पे बिल्कुल जाएंगे, रिलीज़ होने के बाद भी करेंगे, क्योंकि थिएटर पे हर एक फिल्म का एक दौरान एक टाइम फ्रेम होता है जिस तक वो होती है थिएटर पे। बट आफ्टर दैट तो OTT पे होगी, ताकि लोग जो लोग थिएटर पे नहीं देख पाए, वो मिस कर चुके हैं, उनके पास वो अपने कन्वीनियंस पे देख पाए।